Now, the thing to remember is, please try to understand this, everyone. The key to gaining knowledge is always to unlearn and then relearn. Yeah, very, very important. Some things have been taught to you in class 9th and 10th, and while the teachers were absolutely right in what they were teaching you, the knowledge that was given was not complete. Complete knowledge cannot be given. In fact, when I'm teaching, this is also not complete knowledge. So, some of the concepts that you have learned are limited in scope. Yeah, there is more to it than what you have learned. So what you need to do is you need to unlearn that. You don't if you latch on to it, जो आपने पहले सीखा हुआ है, तो जो मैं सिखाऊंगा वो आप नहीं सीख पाओगे. और जो मैं सिखा रहा हूँ अगर आपने इसको लैच ऑन कर लिया तो आप आगे नहीं सीख पाओगे. So you have to unlearn what you have seen previously and then relearn what I'm teaching you now. So up till now you have learned that friction is force which always opposes motion. And I am going to show you that this is not always the case. In fact, friction is responsible for the fact that we move forward. हमारी गाड़ी रोड पे आगे बढ़ती है, that is because of friction. Friction is not opposing it. And this fact should have been obvious if uh, if somebody tells you that friction is opposing the motion of a car on the road, then the first question that should come to your mind is, if that is the case, then why do you have treading on the tires? टायर को बिल्कुल स्मूथ कर देना चाहिए. स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारी गाड़ी और तेज भागेगी. बट ऐसा तो नहीं होता है. So one example is a car on a road. But car on a road is a very complicated example because the direction of friction acting on a car keeps on changing, right? We'll come to that. We will come to. I'll tell you what happens in a car later on. I will also show you that friction can be not only in the direction of motion, but friction can be perpendicular to the direction of motion. तो गाड़ी एक डायरेक्शन में चल रही है और फ्रिक्शन परपेंडिकुलर है उसके. ऐसा भी हो सकता है. आप सड़क पे दौड़ रहे हो और फ्रिक्शन आपको जो लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ मोशन. दैट इज आल्सो पॉसिबल. Then later on I will show you that friction can have absolutely any direction with respect to the direction of motion. Friction can be at an angle of 37 degrees from the direction of motion. Friction can be at an angle of 53 degrees. Friction can be at an angle of 120 degrees. 0 से लेके 180 तक कोई भी डायरेक्शन हो सकता है फ्रिक्शन का with respect to the motion of an object, right? So please remember not to fall back on what you have learned in class 9th and 10th, and always fall back on your notes here. Always fall back on what you have learned here. Okay, so first I think I've already discussed how friction acts, but I want to discuss this again. So we have, let's say, the floor, and we have an object which is kept on the floor. This may be your chair, maybe that you are sitting on. And if I apply a force on this object, then यहाँ पे then here there is friction.
Right. So what I want to do is I want to see what is happening at a microscopic level. And remember, now we are moving from the very slowly, but nevertheless, we are moving from the ideal world to the real world. Okay, very very slowly. This is just one complication that I'm adding. However smooth you may think that a surface is, आपने जो है एक आई डोंट नो प्लास्टिक के सरफेस को टच किया और आपने बोला अरे थोड़ा स्मूथ है. It turns out that our crude senses, हमारे senses इतने crude हैं, हमारा हमारा जो फिंगर का टिप है वही इतना रफ है कि हम कभी भी किसी सरफेस के एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक रफनेस को हम कभी सेंस नहीं कर पाएंगे. राइट, तो अगर आपने एक मेटल सरफेस को टच किया, पॉलिश बिल्कुल स्मूथ मेटल है, right, so you will say, oh, this is very smooth, there is no friction here. But in reality, all surfaces at the microscopic level are something like this. ठीक है. Springs with mass अभी नहीं पढ़ेंगे. So this is the surface of the floor that I have drawn. Basically what I'm doing is I'm taking a very very small part here and I'm sort of ये जो स्मॉल पार्ट लिया है इसको मैं यहाँ पे enlarge कर दे रहा हूँ. This is small part is being enlarged. So this is the surface of the floor, and the surface of the object, I will draw it in a different color. Uh, Maybe this is your chair, right? Maybe this is your the legs of your chair. So the ऊपर वाला जो surface है, that would be something like this. Right? So this is the surface of the object. Now, as you can see, what has happened is, and notice that nowhere have I made contact. ये हम पहले discuss कर चुके हैं. So when you are sitting on your chair and your chair is in contact with the floor, then it is not really in contact with the floor, right? It is the electrostatic repulsion between the atoms of the floor, between the electrons in the atoms and molecules of the floor, and the electrons in the atoms and molecules of the chair. This repulsion is literally making your chair hover. It is literally making your chair levitate on the ground. But the distance is so small that our visual senses will tell us that नहीं ये तो contact में. अब जो imperfections हैं surface पे, surface of the object, surface of the floor, जो imperfections हैं इस इन दोनों surfaces पे, they are composed of, let's call them hills and valleys. Okay, so uh, maybe this is a hill, this is a valley, this is a hill, this is a valley, and so on and so on. So since these imperfections on the surface are composed of hills and valleys, when two surfaces interact, or you actually put your chair on the surface of the floor, right? Then what you are doing is that you are intermeshing these hills and valleys in both the surfaces. Right? So this
phenomena that is happening, I will call it the intermeshing of the hills and valleys. Okay? Now, एक बार जब एक सरफेस को दूसरे के कांटेक्ट में डाला और ये हिल्स एंड वैलीज दोनों सरफेसेस पे इंटरमेश कर गई. Remember, there is no contact, but the hills and valleys have intermeshed like I have drawn here. Now, if I want to apply a force on the object so that it will move forward, right? So if I apply a force on the surface of the object, if I apply force on the object, then this surface will have a tendency to move forward under the influence of the force that I have applied. But when this surface begins to move forward, it is these intermeshing which will stop the motion of the object. ये आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? जब ये ग्रीन सरफेस आगे बढ़ेगा, right? जब ये ग्रीन सरफेस आगे बढ़ेगा, मैंने शायद उल्टा बना दिया, ये वाला जो सरफेस, ये वाला जो पार्ट है सरफेस का, ये आके इस हिल से लड़ जाएगा. ये वाला जो पार्ट है सरफेस का ऑब्जेक्ट का, वो इस हिल से लड़ जाएगा. ये वाला जो पार्ट है हिल का, जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो इस हिल से आके लड़ जाएगा. एंड at the end of the day, remember that these hills and valleys are made up of atoms and molecules. And these atoms and molecules are held together by electromagnetic bonds, right? So when I move the surface of the object, what I'm actually doing is I am trying to break this intermeshing, right? And the electrostatic bonds between the various atoms and molecules are trying to stop me from breaking the hills and valleys. मैंने और फोर्स लगाया, राइट? मैंने फोर्स लगाया 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 और ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया. अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो यहाँ से ये हिल्स एंड वैलीज टूट गए या यहाँ से इसके हिल्स एंड वैलीज टूट गए. Right? So I'll just write. So if motion occurs, then either of these bonds must break, right? अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो जो ऊपर वाली येलो लाइन बनाई है वहां से ये ग्रीन वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, या ये जो नीचे वाली येलो लाइन बनाई है वहां से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है ना? हाँ पार, दोनों भी हो सकते हैं. बिल्कुल सही पूछे. हाँ, दोनों हो जाएंगे. अगर दोनों हो जाएंगे तो भगवान कृष्ण आएंगे और बोलेंगे वाह पार्थ, तूने इतना अच्छा काम किया. Both can happen, of course both can happen. I'm just telling you, this is not an exact science. This is so complicated that we have, when we actually study friction, we'll just reduce it to one force. That's it. End of story. So yes, both can break. Yes. So if you take, I don't know, if you take your pen, for example, right? Take your pen and I don't know, put it on your table, right? And आप अपने पेन को पकड़ो, अगर एक्सपेंसिव पेन नहीं है, और आप जो है ना उसको टेबल पे रगड़ दो. जब आप टेबल पे रगड़ दोगे क्या होएगा? I just want to show you that whatever I have drawn will actually happen. So what would happen if the ऊपर वाला yellow line के molecules break?
what would happen if the ऊपर वाला yellow lines के molecule break? तो अगर ऊपर वाली येलो लाइन से ब्रेकेज होता है तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा टूट जाएगा, राइट? लेट मी यूज द ये वाला पार्ट जो है ये टूट जाएगा। अब ये वाला पार्ट टूट के क्या करेगा? ये वाला पार्ट टूट के यहाँ पे लॉज हो जाएगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा। अगर ऊपर वाली लाइन ब्रेक हो रही है ये वाला पार्ट टूट जाएगा और ये वाला पार्ट टूट के क्या करेगा? यहाँ पे रह जाएगा, राइट? सिमिलरली ये वाला पार्ट टूट जाएगा, ये वाला पार्ट टूट के यहीं पे रह जाएगा। उसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का क्या मतलब है कि ये वाला पार्ट टूट गया और अगर ये वाला पार्ट टूटा तो ये हो सकता है कि इसमें लॉज हो जाए या यहीं पे गिर जाए। सिमिलरली अगर ये वाला पार्ट टूटा तो ये हो सकता है कि इसमें लॉज हो जाए या यहीं पे गिर जाए। Similarly, अगर ये वाला पार्ट टूटा तो this can actually go and stick into this part or it can just fall down, or a combination of these two may happen. Okay, or a combination may happen. In either case, the molecules or a set of molecules from one surface will be lodged or will be attached to the other surface. इसको हम हिंदी में बोलते हैं घिस गया। तो अगर आप पेन को टेबल पे रगड़ोगे तो आप बोलोगे अरे मेरा पेन घिस गया। बट व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड व्हेन यू रब योर पेन ऑन द टेबल, राइट? एंड आई डोंट मीन कि उसका निब वाला पार्ट, आई मीन उसको हॉरिजॉन्टली रख के आपने उसको रब किया। What is happening is that due to the imperfections on the surface, due to the hills and valleys on the surface, and due to the intermeshing of the surfaces of the pen and the table, right? Billions of molecules of the pen are being transferred, are being broken off, and are lodged into the table. Or it may happen ulta, right? Billions of molecules of the table are sort of lodged into the pen. अगर आप अपना पेन टेबल पे रगड़ोगे तो आपका थोड़ा सा टेबल घिस जाएगा और थोड़ा सा पेन घिस जाएगा, राइट? ओके, so this happens, this really happens, and this force is called friction. And from this it should be obvious that friction has a very basic property, and that basic property is that friction will allow motion only if the bonds are broken. The intermeshing that has happened between the two surfaces is broken. And to break the intermeshing between two surfaces, you require a certain value of force. You require a certain value of force. So this means that when I apply a force, when I apply this force F, when I apply this force F, then this will not result in the motion of this object. Okay, it will result in the strain that will be produced. It will result in the uh, tendency of motion of the object. ये ग्रीन वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं, जो इंटरमेशिंग हुई हुई है, वो उसको रोक रहा है, ठीक है ना? Now I will increase the force and that will increase the tendency of motion, and I keep on increasing the force, then at some point of time the bonds will break. कौन से bonds break होंगे ये मुझे मालूम नहीं है, ना मैं predict कर सकता हूँ, ना मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ही bonds break होंगे, ना मैं बोल सकता हूँ कि दोनों bonds break होंगे, but bonds will break at some point of time at some value of force, and when that happens, the object will start to
move. The object will be capable of motion. Right. So let's start with the mathematics of friction. And before I start, can just non-mathematically, can you tell me uh, how to decrease this intermeshing and how to increase this intermeshing? First, let's talk about increasing the intermeshing. कैसे increase कर सकते हैं intermeshing? ये जो intermeshing हो रहा है, we want to increase this. नहीं, हम कोई सरफेस पे चेंज नहीं कर रहे, नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोर, राइट? ऑब्जेक्ट है, फ्लोर, आपकी कुर्सी है, फ्लोर। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि सैंड पेपर लेके कुर्सी का नीचे वाला पार्ट घिसोगे, यू डोंट वांट टू डू दैट। हाँ राधिका, गुड, वेरी नाइस। यस अभिजीत, यस यस यस। नहीं जोहेब, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम सरफेस को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तब भी हमें इंफॉर्मेशन इंक्रीज करनी है। हम सरफेस को नहीं टच कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात, यस यस यस। सो इफ यू फोर्स इंक्रीज, क्या बोल रहा है भाई? So if you get up from your chair, right? If you get up from your chair and push your chair, make your chair move, it's easy. But if you are sitting on your chair and then you ask somebody to move the chair, very difficult. Especially आप अपना पैर वैर सब ऊपर कर लो अगर, very difficult for you to for मनीष थप्पड़ खाएगा तो अभी। रोलर वाला है, मैं रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ। So except Manish and roller wale, except that, except that if you are sitting on a chair and you ask somebody to move it, very difficult for that person to move. If you are not sitting on the chair, depending on the weight of the chair, quite easy to move. So if intermeshing increases, then friction increases. How can I decrease this intermeshing? How can I decrease this intermeshing? How can I decrease this intermeshing? Using lubricant, but I'm not using any oiling हो गया, without that, right? I mean, we are not using anything external. We are not interfering with the surface. Then हम हमारे पास और कुछ नहीं है। या फिर नहीं, you can't reduce mass. Yes, good. अगर डाउनवर्ड फोर्स लगाने से इंटरमेशिंग इंक्रीज हो गया, तो किधर फोर्स लगाने से इंटरमेशिंग कम हो जाएगा? अगर डाउनवर्ड फोर्स लगाने से इंटरमेशिंग इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स लगाने से इंटरमेशिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट? देयरफॉर यू रिमेंबर दिस, वो 10th में, आई थिंक 10th में पढ़ाते थे कि बक्सा है, उसको आप या तो पुश कर सकते हो या फिर आप उसको पुल कर सकते हो, राइट? सो दिस इज पुल and this is push. Which do you think will make it easier? Which do you think will make your life easier? Which will make your life easier? बिल्कुल सही दृष्टि। सब लोग आधा आधा क्यों, मतलब why is it 50-50? थोड़ा सोच के आंसर दो भाइयों, बहनों।
अगर आप पुल करोगे तो बेसिकली यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विच हैज दीज टू कंपोनेंट्स. अगर आप पुश करोगे तो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स विच हैज दीज टू कंपोनेंट्स. नाउ अगेन टेल मी, what will make your life easy, pull or a push? What will make it what will make it easier to move this block? It should be a pull, right? Because you are applying a force which is upwards. तो ये upward force से क्या हो रहा है, आप जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरमेशिंग है उसको आप रिड्यूस कर दे रहे हो. जब आप पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स का कंपोनेंट है, दिस विल increase the intermission, right? This will increase the intermission. Therefore, this pull must make your life easier if you want to move this. Okay. So before we start with the mathematics of this, नहीं भाई स्मिथ मैं ऐसा कैसे बोल दूंगा यार. Okay, so what I want to do is I want to define some things. और ये जो definition है ये हम we will use these definitions to study the phenomena of friction. However, there is a catch. The catch is that whatever I'm going to teach will be divided in two parts. The first part will be where we will discuss the friction between two surfaces, one which is movable and the other which is fixed. Right? So surface of the floor fixed, surface of the object movable, right? So if one surface is fixed and one surface is movable, then the behavior of friction is different, slightly different as compared to when both surfaces are movable. Right? When are both surfaces movable, आप अपने पेन को अपने हाथ पे रखो हॉरिजॉन्टली और अपना हाथ मूव करो, तो अब friction is acting between your hand and the pen is now also moving and your hand is also capable of moving. Therefore, these two surfaces, both of which are capable of motion, will have a slightly different behavior of friction as compared to the behavior of friction when one surface is fixed. So, what I am going to discuss now will be applicable only when one surface is fixed. Okay. So, when one surface is now when one surface is fixed, okay, floor hai, wall hai, these are these are uh, these are names of common objects which we will consider as fixed. So
कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, उसमें जो है जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन कांटेक्ट विद अ फ्लोर, और इट इज इन कांटेक्ट विद अ वॉल, और इट इज इन कांटेक्ट विद अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, तो ये सारे जो केसेस हैं दे विल बी when one surface is fixed, right? So I will just write here that this is case 1. Now, case 1 itself will have two cases. Case 1 itself will be divided into two scenarios. The first scenario is when the movable surface also does not move. Okay, that means that आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हो और मैं कुर्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, एंड मैं कुर्सी को मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, तो मैंने इधर से फोर्स लगाया, उधर से फोर्स लगाया, पुश किया, पुल किया, बट आपकी कुर्सी मूव नहीं कर रही, राइट. और मनीष की कुर्सी जिसमें रोलर लगे हुए, रोलर तोड़ दिए मैंने, और उसके बाद से मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुर्सी मूव नहीं कर रही. दैट इज द फर्स्ट सिनारियो. द सेकेंड सिनारियो is that the chair is moving. Now it may be moving because of the force I have applied, or it may be moving because of gravity, राइट. मैंने इंक्लाइन प्लेन पे आपकी चेयर रख दी, आप उसके ऊपर बैठे हो और इंक्लाइन प्लेन पे आपकी चेयर स्लाइड डाउन करने लग गई. So it may be moving because of gravity, which is no different from the fact that I am applying a force. मैं अगर force apply कर रहा हूँ, आपकी चेयर मूव कर रही है, या gravity force apply कर रही है, उसकी वजह से आपकी चेयर मूव कर रही है, all same, right? So case 1 will have two scenarios. One where the object, in spite of application of force, does not move, and scenario 2 is that uh, the application of force causes motion of the object on the fixed surface, right? So to analyze these two scenarios, to analyze the fact that we want to analyze the friction, we want to analyze the friction when one surface is fixed. To do this, what I'm going to do is I'm going to introduce a new term. Okay, it is nothing new as such. It is just old thing, which I'll call it with a different name. So I'm going to define something called uh, I'm going to define something called the applied force. Okay, I'm going to define something called the applied force. So what is the applied force? I'm going to write excuse me. I'm going to write F applied, right? So summation of forces parallel to the interacting surfaces right, friction not included. So this is the definition of F applied. Okay, so what do I mean by definition of? मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, बोलूंगा अच्छा मेरे को F applied बताओ. Okay,
So I'm just going to change the slide and I'm going to show you a couple of examples where I work out the value of F applied. So first, let's take the simplest example. F, right? So I draw the free body diagram. Forces acting on the free body diagram. Mg, N, F. एक मिनट just hold on. Sorry. So I draw the FBD of the object. Please notice that I have not drawn any friction. Okay? No friction has been drawn by me. Now I look at the forces which are parallel to the interacting surfaces, right? I want to find, eventually I am going to talk about the friction between these two surfaces. Therefore, I'm looking for the forces parallel to these surfaces. And the forces parallel to this surface is this. So in this case, F applied is equal to your turn now. Please tell me the values of F applied. Good, good boy, Tanmay. Yes, very. ये किसका बताया? हाँ, बहुत बढ़िया बात थी. नहीं सुनल देखो. अभिजीत गलत है, राधिका बिल्कुल सही है. एमजी तो आ ही नहीं सकता. एमजी कहाँ से आ रहा है विश्वजीत? मैंने क्या बोला? व्हाट इज एफ अप्लाइड? हाँ, तन्मय बिल्कुल सही. नहीं सत्यम, यू डोंट राइट एफ साइन थीटा एंड टी. एंड कहाँ से आ गया? तो मैथ्स है ना. बिल्कुल सही जवाब. यस. So basically what you do is draw the FBT. नहीं, साइन एक और फोर्स है ना उसके ऊपर. mg n f.
ऐसे एक्सिस ले रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। अपनी कॉपी में जहां जहां आप ये कर रहे हो ना, प्लीज लीव सम स्पेस बिकॉज देयर इज अ सेकंड पार्ट टू द क्वेश्चन व्हिच आई विल आस्क एंड a third part as well. So in this case, f applied will be equal to f cos parallel to the surface. Surface parallel to the surface. कौन सी फोर्स है पैरेलल टू द सरफेस? f cos. फिर इसका एफडीडी बनाता है mg n f मेरे को पैरेलल टू द सरफेस चाहिए तो मैं ऐसे एक्सिस बना लूंगा, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f cosine थीटा। तो यहाँ पे f applied will be equal to what? So there is an ambiguity here now. So it will be f sin theta minus t or t minus f sin theta. मैं और क्यों लिख रहा हूँ? मेरे को मालूम नहीं है ना कौन सा इसमें फोर्स बड़ा है। सपोजिंग f sin थीटा 10 न्यूटन है और t 1 न्यूटन है, तो फोर्स अप्लाइड 9 न्यूटन हो गया राइट हैंड साइड में। और अगर t का वैल्यू 15 न्यूटन है और f sin थीटा का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो f अप्लाइड का वैल्यू 5 न्यूटन हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट। है आया समझ में अभी विश्वजीत? Okay. Please leave some space, okay? Please leave some space. I'm going to give you 3 more. 3 और। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बोलने का टाइम है। Anybody who is not understanding, please tell me now. Let me drink some water. हाँ एक मिनट रुक जाओ ऋषिक, एक मिनट ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका लेना है। हो गया? Next, remember you have to tell me the value of f applied.
आराम से वर्कआउट करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही। यस विश्वजीत। नहीं सुदीप गलत है, नहीं बहुत गलत है। हाँ कौन सा सरफेस है यहाँ पे, सरफेस ऑफ द इंक्लाइन होएगा ना। इंटरैक्टिंग सरफेसेस कौन से हैं देखो। नहीं जोहेब, हॉरिजॉन्टल तो मैंने कभी बोला ही नहीं, मैंने बोला पैरेलल टू द इंटरैक्टिंग सरफेसेस। नहीं ये गलत है ऋषि, सुदीप, अभिजीत, please try it again, please draw the FBD। पार्थ, तन्मय फिर से करो, तनीषा एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ स्पेस छोड़ना है भाई, जो पुराने 3 क्वेश्चन है स्पेस छोड़ना है, इसमें भी स्पेस छोड़ना है। वेदांत प्लस कैसे आया। अभिन बिल्कुल सही है। आदित्य ना फिर से ट्राई करो। नहीं विश्वजीत गलत है सेकंड का। नहीं नहीं राधिका, एन साइन थीटा कहाँ से आ गया। एन तो बाई डेफिनेशन परपेंडिकुलर है ना। नहीं ख्याति, पहला वाला गलत है। एफबीडी ड्रॉ करो ख्याति। नहीं साइन गलत है, फिर से ट्राई करो। सुदीप एम मिस कर दिया बट ठीक है, सही है। जोहेब गलत है। नहीं सोनल, प्लीज ड्रॉ द एफबीडी फर्स्ट, ड्रॉ द एफबीडी। सत्यम, नहीं नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। So I will do the first one. Look, I'll do the first one. So the forces acting on the block are, n तो आ ही नहीं सकता है ना यश, क्योंकि बाय डेफिनेशन n is perpendicular to the surface। नहीं अभिजीत गलत है, देखो मैं कर रहा हूँ ना पहला वाला, देखो। अब जो इसमें सरफेस है वो तो ये रहा, तो मैं ऐसा एक्सिस बनाऊंगा and I know that this will be theta. Therefore, the component of mg here will be mg cosine theta, and the component of mg here will be mg sine theta. So, F applied will be equal to, ये डायरेक्शन में चाहिए, रिमेंबर ये है सरफेस, ये वाला डायरेक्शन चाहिए, इक्वल टू F minus mg sin theta or mg sin theta minus F. I don't know which one. Right? और जिन लोगों ने F minus mg sin theta आंसर दिया था, you have to be careful whether it is F minus mg sin theta or mg sin theta minus F. मालूम नहीं। हाँ अब करो। हाँ
थर्ड का बिल्कुल सही लिखा है। हाँ मॉड बोल सकते हैं बिल्कुल, यस 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 एब्सोल्युटली। बट फिजिक्स में जनरली मॉड का यू नो, मैथ्स में तो बहुत ही क्लियर रहता है, बट फिजिक्स में ये किसका है सुदीप, कौन से वाले का आंसर दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही, yes। जिन्होंने पहले सेकंड का आंसर दिया था, मुझे नहीं मालूम है सेकंड का आंसर था वो, मैं केवल फर्स्ट का ही आंसर सोच रहा था, इसलिए मैंने अगर गलत बोला हो तो आंसर। ये कौन से का है वेदांत? ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस यस, गुड। हाँ गुड गुड गुड, अब समझ में आ गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, एक ये गलत पता है मेरे को। तनीषा प्लस होएगा या माइनस होगा, एक बार देख लो। ये मेरे को किसने गलत बताया? आदित्य। ये जो सेकंड वाला तो सही लग रहा है, फर्स्ट वाला क्या लिखा है आदित्य? हाँ प्रसन्ना सही है, बिल्कुल। तन्मय बिल्कुल सही है। ऋषि बिल्कुल सही है, थर्ड वाला, यस। वेदांत मतलब ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट थोड़ा गड़बड़ लगा रहा है ना, या कंपोनेंट्स गलत दिए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जोहेब। धनुष बिल्कुल सही है। एन तो हो नहीं सकता ना सत्यम, एन इज बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? वी आर लुकिंग फॉर पैरेलल टू द सरफेस। थर्ड का सोनल पूरा एफबीडी बनाओ बच्चा, एफबीडी बनाओ सोनल। देखो एक आपने मिस कर दिया फोर्स, लुक एट माय एग्जांपल दैट आई हैव डन। सही है भाई, ग्रेट। हाँ ख्याति, वेल डन, यस। एमजी आएगा ना राधिका? एमजी आएगा और एफ का एक कंपोनेंट आएगा। हाँ वेदांत बिल्कुल सही है, अभिजीत बिल्कुल सही है। हाँ सही है राधिका, हाँ। हाँ प्रसन्ना बिल्कुल सही है, सत्यम बिल्कुल सही है। और सेकंड का बता रहा है ना मेरे को। सोनल गलत कर रही है फिर, क्यों? look at the arrows, if they are opposite then it is minus, right? वो दो वेक्टर अगर ऑपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होएगा वो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। look in your fbd, is it that the two ऑपोजिट उल्टा है ना, ऐड नहीं करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। साई ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, देख फिर से बना। कॉस थीटा है या साइन थीटा है?
बिल्कुल सही है तन्मय, धनुष बिल्कुल सही है। चलो मैं कर रहा हूँ। हाँ, पार्थ ये सेकंड वाले का है कि नहीं है? तो आंसर केवल दिया जा रहा, बताना भी तो पड़ेगा। हाँ, सेकंड वाले का सही है। सेकंड वाला MgF and पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल ये रहा, पैरेलल लाइन बना लिया मैंने। कंपोनेंट्स निकाल देते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा F कोसाइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा F साइन। सब में स्पेस छोड़ना है, अभी सेकंड पार्ट आ रहा है। ये हो जाएगा mg साइन थीटा और ये हो जाएगा mg कोसाइन थीटा। सो F applied is equal to F cos theta minus mg sin theta or mg sin theta minus F cos theta। थर्ड वाले में mg F n, ये है सरफेस, फिक्स सरफेस। तो ये एंगल थीटा में हॉरिजॉन्टल से दिया है, ये हो जाएगा F कोसाइन थीटा, ये हो जाएगा F साइन थीटा। सो F applied is equal to mg minus F sin theta और F sin theta minus। ठीक है, ठीक है। For all the 6 questions, find the value of normal reaction. For all the 6 questions, find the value of normal reaction. For all the 6 questions, find the value of normal reaction given. For all the 6 questions, find the value of normal reaction given that the surface, that the two surfaces are not separating. That means the acceleration perpendicular to the surfaces is 0. ये मैं आपको बता रहा हूं, that acceleration perpendicular to the surfaces is 0. In fact, acceleration को आप 0 ही ले लो. Then please tell me the value of normal reaction. ये second part है, अभी third part भी आएगा. If acceleration of the objects is 0, tell me the value of normal reaction. हाँ. In the spirit of being a good teacher, मैं पहला वाला कर देता हूँ क्योंकि सबसे आसान है. N is equal to mg, पहला वाला. Right? ऊपर वाला फोर्स is equal to नीचे वाला फोर्स. बाकी आप करिए. Do all, then we'll discuss.
Good. Yes. Yes. सारे कर लो मैं बताता हूँ. Don't write the answer because there are so many ना. I will not be able to. हाँ या ना भी नहीं बोल पाऊँ. मत लिखो सोनल. पहले पहले सब कर लो. फिर मैं एक एक बता देता हूँ. हो गया सारा. तो इसमें आएगा n plus f sin theta is equal to mg. Therefore, n is equal to mg minus f sin theta. इसमें आएगा n plus f cos theta is equal to mg. So n is equal to mg minus f cos theta. Okay. इसमें आएगा n is equal to mg cos theta. इसमें आएगा n is equal to mg cos theta plus f sin theta. Right? और इसमें आएगा n is equal to f. आया ये सबका? Is this everybody is getting these answers? लास्ट क्लास की स्लाइड्स में भेजी क्या? यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने में हालत खराब हो जाती है. अच्छा मैं आज पक्का करूँगा. ये आ गए आंसर सबके आ गए. ये थर्ड पार्ट बोलूँ अब मैं. चलो देखो.
I told you that scenario one is that there is no motion. So in this case, the friction has a magnitude and a direction. So the direction is opposite of apply. And I'm not going to tell you the magnitude. Okay, magnitude के बारे में अभी हम कुछ discuss नहीं कर रहे. So for all these 6 questions on the FBD, okay, for all these 6 questions on the FBD, you have to draw the friction force vector. So in this case, small f से represent करेंगे friction को, right? Small f से represent करेंगे friction को. तो जो भी f applied का direction है, उसके opposite आप friction बना दोगे. अब problem कहाँ आएगी? Can you tell me? Please start drawing. Please start drawing on the FBD the friction वाला vector and tell me in which question does a problem arise. Draw the friction vector. जैसे मैंने पहले वाले FBD में फ्रिक्शन बनाया, वैसे आप दूसरे वाले में बनाओ, तीसरे वाले में बनाओ, चौथे वाले में, पांचवे वाले में, छठे वाले में, and tell me where will there be a problem? Where will there be an ambiguity? Very good, Dhanush. Yes, yes. बहुत बढ़िया. हाँ. Good. नई पार्ट्स देखो, FBD में देखो. Yes, तन्मय. Very good. Yes, yes, yes. नहीं विश्वजीत, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं. हाँ, बता रहा हूँ. So I have told you that in scenario 1, when there is no motion, the friction has a certain magnitude, which we will discuss later, and it has a certain direction. The direction is opposite to the direction of F applied. Okay. तो पहले वाले क्वेश्चन में F applied F है, which is to the right, तो लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा. दूसरे वाले केस में F applied F cos theta है, which is to the right, लेफ्ट में फ्रिक्शन आ जाएगा. तीसरे वाले केस में F applied is F sin theta minus T or T minus F sin theta. We don't know which is greater. हमें नहीं मालूम है कि F sin theta बड़ा है या T बड़ा है. अगर F sin थीटा बड़ा है तो F अप्लाइड राइट हैंड साइड में होगा, फ्रिक्शन लेफ्ट में आएगा. अगर T बड़ा है तो T माइनस F sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और फ्रिक्शन राइट हैंड साइड में जाएगा. आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. I hope this is understood by everyone. So this is an ambiguous direction of friction. I don't know where it is. I don't know where it is, and neither do you. Neither does anyone. Unless I tell you which is greater, F sin theta or T,
अनलेस आई टेल यू स्पेसिफिकली, तब तक आप मेरे को नहीं बता सकते। फिर इसमें आते हैं, एफ अप्लाइड क्या है, एम जी साइन थीटा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा माइनस एफ, अगेन ambiguous, so I don't know what the direction of friction is. जहां जहां मैंने और लिखा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन एम्बिगुअस हो गया, ओके। जहां जहां मैंने और लिखा है वहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन एम्बिगुअस। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे बताना पड़ेगा फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि एफ बड़ा या एम जी साइन थीटा बड़ा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि एफ कॉस थीटा बड़ा या एम जी साइन थीटा बड़ा, तब आप डिसाइड कर पाओगे फ्रिक्शन की तरह। सिक्स वाले क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि एम जी बड़ा या एफ साइन थीटा बड़ा, तब आप बता पाओगे फ्रिक्शन की तरह। अगर एम जी सिक्स वाले क्वेश्चन में अगर एम जी बड़ा है तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा, फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर एफ साइन थीटा बड़ा है तो जो अप्लाइड फोर्स है वो ऊपर आ जाएगी और फ्रिक्शन नीचे हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इज ए डायनेमिक ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट समथिंग लाइक व्हाट वी हैव सीन बिफोर, टेंशन। अच्छा, रस्सी इधर लगी है तो टेंशन इधर होगा। इट इज नॉट लाइक ग्रेविटी, अच्छा अर्थ नीचे है तो एमजी नीचे लग रहा होगा। इट इज नॉट लाइक any other force, it is a dynamic object, it can change its direction, okay, its direction is dependent on external other factors, and I will show you, not today, in the next class, that not only its direction but its magnitude is also a dynamic object. The magnitude of friction is also going to adjust itself according to external factors. So please leave some space in all the 6 questions, and in the next class we are going to discuss about the in the next class we are going to discuss that is why it is necessary to take the to find the magnitude. Let me just save. क्यों इतना आसान तो है फ्रिक्शन, क्या क्या नहीं इसमें समझ में आया? मैसिव स्ट्रिंग, अच्छा है क्या? अच्छा ठीक है, मेरे को याद दिलाना, वो बहुत ही इजी होता है, मैं बताता हूँ। सर एक डाउट है सर, फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है बट है सर। आप एक नया स्लाइड लीजिए ना। नहीं लूंगा, वैसे ही बता। अच्छा सर, सर वो जानना था मुझे कि सर अगर एक एल टाइप का सरफेस है, ठीक है, और उसके सर एकदम मतलब एज पे हमने एक ब्लॉक रखा, मतलब जो दोनों सरफेस से कनेक्टेड है, जो परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल है, तो सर अमन सर बता रहे थे कि उसमें जो परपेंडिकुलर वाला सरफेस उसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा सर, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। क्या 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 सर आप एक बार छोटा सा सर एक एल बना दो ना साइड में। एल, हाँ नहीं बन रहा यार ये। अच्छा हाँ हाँ, फिर सर आप एक ब्लॉक रखो, एक ब्लॉक ड्रॉ कर दो वहां पे जहाँ पे 2 पॉइंट्स जुड़ रहे हैं ना, वहां पे सर एकदम वहां पे। हाँ हाँ, तो सर अमन सर बोल रहे थे कि ये जो परपेंडिकुलर वाला सरफेस है उसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 0 हो जाता है। हाँ बिल्कुल 0 होएगा, यस। सर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कैसे? अगर वो नॉन जीरो होएगा तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होएगा, एक्सेलरेशन होएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। लेकिन सर सरफेस है तो लगाना चाहिए ना।
नहीं, सरफेस है तो लगाना थोड़ा ना चाहिए। सरफेस क्यों लगाता है नॉर्मल रिएक्शन? क्या मैकेनिज्म होता है? क्या बताया था मैकेनिज्म मैंने? अभी तो शुरू में भी क्लास में डिस्कस किया, नॉर्मल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है ना बिटवीन द एटम्स। हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कब आएगा? ऐसे थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे जैसे तू अपने कमरे में बैठा है कुर्सी पे, तो तेरे और तेरे कमरे के दरवाजे के बीच में थोड़ी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कब होएगा बिटवीन यू एंड द डोर ऑफ योर रूम? व्हेन यू गो एंड लीन ऑन द डोर। समझ रहा है ना मेरी हाँ बात? हाँ सर। तो यहाँ पे व्हेन यू हैव केप्ट दिस ब्लॉक, even though it is in contact with the vertical surface, but there is no repulsion between the vertical surface and the surface of the object, because if there was, then the object would move to the right and then the normal reaction would go to zero, then the contact would be broken, right? तो ओके। वर्टिकल वॉल के साथ अगर नहीं हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्यों हो रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी नीचे खींच रही है। इनफैक्ट ये एचसीवी में क्वेश्चन है, तूने पूरा एचसीवी नहीं किया, इसका मतलब ये एचसीवी में क्वेश्चन है कि if the earth suddenly I think it was if the earth suddenly stops rotating, ऐसे कुछ करके है, तो क्या होएगा अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो गई सडनली? मैंने ऐसे फिंगर क्लिक किया, अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो गई, तो क्या होगा अपने साथ? व्हाट विल हैपन? सर हम मतलब फ्लोर से कांटेक्ट छूट जाएगा अपना? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं नहीं छूटेगा कर ना, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अरे जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी खत्म होएगी, हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर जीरो हो जाएगा, लेकिन कांटेक्ट नहीं छूटेगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ओके। नॉर्मल जीरो हो जाएगा क्योंकि अब अर्थ हमें खींच नहीं रहा है नीचे, तो हमारे मॉलिक्यूल्स जमीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल विल बिकम जीरो, बट नॉर्मल जीरो और कांटेक्ट लेस, कांटेक्ट नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। ठीक है ना? हाँ समझ गया। चलो भाई, so I'll see you guys in the next class tomorrow. Please remember to leave some space. ये ही क्वेश्चन हम फिर से करेंगे। चलो, बाय बाय।